Today, we are going to talk about something very important, something that we don't like talking about and yet we want it 24/7. I am talking about mental wellness. Our guest for the evening is Dr. Era Dutta. How to mind your mind, happiness. एक ऐसी चीज जो हम सब चाहते हैं, instant happiness, instant noodles, instant likes, instant friends, instant dislikes. रिश्तों में गहराई नहीं रह गई है, सब कुछ तुरंत या सुपरफिशियल हो गया है. अगर आप जीते जी ही मरते रहेंगे, so when will you enjoy life? हैप्पी कब रहेंगे? तो मैं प्रॉमिस करती हूँ चंद 15-20 मिनट के सफर में सैडनेस से हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे, इलनेस से वेलनेस की तरफ जाएंगे, खालीपन, एम्प्टीनेस, लोनलीनेस जो आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है लोगों की, उससे होलनेस की तरफ बढ़ेंगे एंड एक अनमाइंडफुलनेस, नॉट बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट से माइंडफुलनेस की तरफ सफ़र करेंगे. तो चलिए मेरे साथ. Good evening, friends. We are back with a fresh episode of FlexiSTRONG Talks. I am your host, Lokesh Nathani. A very warm welcome to each one of you from all of us at FlexiSTRONG Talks and Sham Steel. I hope you are taking good care of yourself. We continue to bring to you inspirations and life lessons of those who have decoded the formula to live a happy, healthy and fulfilling life. Today, we are going to talk about something very important and yet we ignore it and we don't pay attention to it. Something that we don't like talking about and yet we want it 24/7. Yes friends, I am talking about mental wellness. Our guest for the evening is Dr. Era Dutta. Today, she is going to share with us some tips that will help us lead a happy and healthy life. She is a regular speaker on various platforms. Some of them are Shah Rukh Khan Mir Foundation, Times Group, IIT Kharagpur, NIFT and many more. Her mantra in life is wellness in balance. So friends, please join me to welcome our very special guest of the evening, Dr. Era Dutta. Over to you, Dr. Dutta. Hi, good evening ladies and gentlemen. Welcome to How to Mind Your Mind. ये नाम थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, ये काम भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जिसमें बहुत कुछ चीज़ें शायद आप जानते ही होंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग साथ में एक जर्नी करेंगे जिसमें हम सीखेंगे हमारे माइंड के बारे में. हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ जो हम सब चाहते हैं, जो हम सब कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करने की. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते भी नहीं हैं कि लाइफ में उनको हैप्पी क्या करता है. What is the source of their happiness? They've never really bothered to even take out the time to look into it. फिर भी if I interview about 100 people, अगर आज इतने सारे लोग जो देख रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों से एक ओपिनियन पोल करूं और इंडिविजुअल आंसर्स भी देखूं, तो ब्रॉडली ज़्यादातर लोग कह देंगे, देखिए डॉक्टर साहब, अगर आप मुझसे पूछें that what does it take for me to be happy, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा है, रोटी, कपड़ा और मकान. मजाक नहीं कर रही हूँ. Most of us say that our basic needs should be met with and that's good enough to start off with. But रोटी, कपड़ा और मकान की डेफिनेशन आजकल बदल गई है. रोटी, कपड़ा, मकान और what else? ये और में हम सब बन गए हैं. Well, to be honest, हम सब एक instant gratification generation हो गए हैं. We're all looking for that instant happiness, instant noodles, instant likes, instant friends, instant dislikes. रिश्तों में गहराई नहीं रह गई है, सब कुछ तुरंत या superficial हो गया है. And that has caused a lot of damage. It has led to a big burden on the mental health of people. तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम इस सफ़र में चंद 15-20 मिनट के सफ़र में सैडनेस से हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे, इलनेस से वेलनेस की तरफ जाएंगे, खालीपन, एम्प्टीनेस, लोनलीनेस जो आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है लोगों की, उससे होलनेस की तरफ बढ़ेंगे एंड
एक अनमाइंडफुलनेस, नॉट बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट से माइंडफुलनेस की तरफ सफर करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। नंबर 5, कोई सुपरस्टिशियस कारण नहीं है कि मैंने नंबर क्यों चूज किया। आज 5 जून है तो मैंने सोचा चलिए 5 नंबर के साथ थोड़ा सा एक रास्ते जर्नी बनाई जाए। सो लेट्स प्ले अलॉन्ग विद द नंबर 5, शैल वी। सबसे पहले मेरे बारे में 5 फैक्ट्स। ये मैं हूँ। मैं एक डॉक्टर बाय डे हूँ, एक मदर बाय 24/7 हूँ। मैंने एमडी साइकियाट्री डीएनबी साइकियाट्री की है एमबीबीएस के साथ, और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट की तरह प्रैक्टिस करती हूँ। मगर मैं अपने आप को एक मेंटल हेल्थ निंजा मानती हूँ। इसका मतलब है कि मैं उन लोगों से निंजा की तरह निंजा चॉप देती हूँ या झगड़ा करती हूँ जो कि मेंटल हेल्थ के बारे में मिथ्स यानी गलतफहमी फैलाते हैं। मैं अपना सोशल मीडिया, कुछ प्रिंट मीडिया, ऐसे फोरम्स जैसे आज है, को यूज करना चाहती हूँ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। तो चलिए छोटा सा एक सिनेमा देखेंगे साथ में। Don't worry, I'm not gonna show you an actual clip, but let's see what I show. तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी मिस्टर पंकज उदास से। इनको कोई मेंटल हेल्थ बीमारी मेरी हिसाब से नहीं थी, मतलब मैंने इनकी साइकियाट्रिस्ट नहीं थी, मगर इनके नाम में बहुत यूनिकनेस है। उदास, सैड। ये सैड गाने भी गाते थे, गजल गाते थे, कुछ मेरी बहुत फेवरेट थी, मेरी मम्मी सुनती थी। जो वर्ड उदास है, इसका लिटरल तात्पर्य है डिप्रेशन, और डिप्रेशन बहुत ही आम बीमारी है। इसके बहुत ही आम लक्षण हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर लोग जब ये शब्द सुनते हैं डिप्रेस्ड, तो सोचते हैं कोई काल कोठरी में बैठा होगा जिसने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया होगा। मगर डिप्रेशन, in the way that it presents in most people, is the way it would show up in you and I. You'd be smiling on the outside, but hurting on the inside. When you have low mood for more than 15 days at a stretch, साथ में इंटरेस्ट चला जाए उन चीज़ों में जो आपको पहले इंटरेस्टिंग लगती थी, भूख और नींद में बहुत फर्क होने लगे, टू मच और टू लिटिल, हर समय थकावट, बेचैनी, चिड़चिड़, रो पड़ना अचानक से, होपलेस लगना, लगना कि कुछ नहीं रखा है इस जिंदगी में, हेल्पलेस लगना कि कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा, गिल्टी लगना बिना कारण, और फाइनली एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड का ख्याल आना, इसको डिप्रेशन कहा जाता है। इसकी ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करती है। सो हर समय वरी करना, रेस्टलेस होना, एक जगह पे नहीं बैठ पाना, माइंड इधर उधर जाते रहना, टेंशन होना, चाहे वो फिजिकल टेंशन हो या मेंटल टेंशन हो, ऐसा लगना कि लोग हमेशा मेरे को देख के हंस रहे हैं, मेरे बारे में मजाक कर रहे हैं, मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। सबसे वर्स्ट आउटकम सोचना, एग्जाम है आपका, ऑफ कोर्स थोड़ी सी एंजाइटी जायज है, बट इवन तो आपने पढ़ाई अच्छी की है, ये सोचना कि एग्जाम तो बुरा ही होगा, टीचर विल लूज माय पेपर एंड देन आई विल हैव टू सिट डाउन अगेन फॉर द एग्जाम। दीस काइंड ऑफ बिजार एक्सट्रीम सिनेरियोज आर एसेंशियली व्हाट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो चिंता एक लिटरल ट्रांसलेशन है इसका हिंदी में, और एक बहुत अच्छी कहावत है कि चिंता और चिता में बिंदु का अंतर है। So these individuals during their lifetime worry so much that while being alive, they're only thinking about the extreme, which is usually death, what we say. So अगर आप जीते जी ही मरते रहेंगे, so when will you enjoy life? Happy कब रहेंगे? This is called generalized anxiety disorder. इसका भी ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करता है। अगली एक मूवी है दोबारा। अब आप दोबारा ट्वाइस बोले या 2 और 12 बोले, आपकी इच्छा है, बट कुछ लोग कुछ चीजें बार 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 करते रहते हैं। जैसे कि अगर कुछ रखा तो उसको सही तरीके से रखने का तरीका खोजते रहेंगे, अगर कुछ साफ किया तो उसको साफ करने का तरीका एक परफेक्ट तरीके से ढूंढते रहेंगे। हाथ धोए तो लगा नहीं नहीं हाथ गंदे हैं, आई मस्ट वॉश अगेन, व्हाट इफ माय हैंड्स आर स्टिल डर्टी, एंड ईमेल भेजने के बाद बार बार चेक करते रहना। ऐसी चीज़ों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। एंड सिर्फ हाथ धोना ओसीडी नहीं होता है, ये बहुत ही लूजली थ्रोन अराउंड वर्ड है। ओसीडी इज व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्सेशन एंड कंपल्शन स्टार्ट्स डिसरप्टिंग योर डे टू डे लाइफ। तो इससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे असर पड़ता है। दैट इज व्हेन इट इज कॉल्ड ओसीडी। थोड़ा बहुत सफाई हम सबको पसंद है। स्लीप इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग। इट्स द वन थिंग विच इज द की टू fitness and happiness and wellness. Everybody endorses it. Yet
Most of us try to avoid it, and then when it goes away, we say, आती क्यों नहीं? So sleep disorders, most commonly insomnia उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है. मगर मैं बोलना चाहूँगी कि इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी, बिकॉज वी आर ग्लूड टू आवर सेल फोन्स, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर, रीड मोर, वॉच मोर, एंड एज अ रिजल्ट जब सोने का बात आती है, जब सोने का वक्त आता है, तब हमारा ब्रेन हाइपर स्टिमुलेटेड होता है. Addiction, something that people don't talk enough about. Drinking once in a while is not something which is called addiction. However, drinking regularly or drinking in amounts that can disrupt your biological, psychological, social and work life. मतलब आपकी ड्रिंकिंग से जब आसपास के लोगों को प्रॉब्लम होने लगे, अगर आपके शरीर को प्रॉब्लम होने लगे, आपके माइंड को प्रॉब्लम होने लगे, इसको एडिक्शन कहते हैं. एंड अल्कोहल एडिक्शन बहुत ही कॉमन है वर्ल्ड वाइड. Magar, let's not ignore the addictions which may not seem so troublesome to most people. But the newest addictions are the ones that I want to talk about. क्योंकि ये आप सब रिलेट कर पाएंगे. शायद अल्कोहल सब रिलेट ना कर पाए. मोबाइल फोन एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, सेल्फी खींचने की एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन एंड इंटरनेट के साथ साथ गैजेट में अगर आप कह लीजिए तो गेमिंग की एडिक्शन बहुत ही कॉमन है. दीज आर द newest 21st century addictions which are out there, and these are mental health problems as well, because ati mein mati, excess of anything is bad for us, right? तो खुशखबरी ये है, मैं कुछ वेलनेस टिप्स शेयर करना चाहूँगी आपके साथ. बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही डूएबल हैं, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलती जो मैं खुद ना कर पाऊँ. तो पहली मेरी टिप जो है इज कॉल्ड अ चेक इन. आपको याद है शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था हाउ आर यू टुडे? ये सवाल हम अक्सर दूसरों से पूछते हैं मगर खुद से नहीं पूछते. सो आस्क योरसेल्फ एवरी डे, हाउ एम आई टुडे? इट्स कॉल्ड अ चेक इन. पहले अंदर पूछिए, फिर बाहर की तरफ दूसरों की मदद करिए. एरोप्लेन में बोला जाता है दैट यू मस्ट 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 पुट ऑन योर ओन मास्क बिफोर पुटिंग ऑन द मास्क ऑफ इवन द चिल्ड्रन. सो हम क्यों ये अपने आप को फॉलो नहीं करते हैं? ईट, स्लीप, हाइड्रेट वेल. ये सिंपल टिप है, वेरी डिफिकल्ट टू डू. अक्सर लोग पानी स्किप करते हैं, अक्सर लोग सोना स्किप करते हैं, खाते नहीं हैं, एंड देन वरी करते हैं कि अरे मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है. याद रखिएगा, सिंपल चीजों में ही जिंदगी अच्छी कटती है. थर्ड टिप है, चलिए साथ में करें, मूव योर बॉडी. ये बहुत जरूरी है. हम 15-20 मिनट से बातें कर रहे हैं, बॉडी स्टैग्नेंट हो गई है, आप एक ही पोजीशन में मोबाइल फोन देख रहे हैं, तो पहले अपना मोबाइल उठाइए एंड मूव योर बॉडी. एक्सरसाइज, गेट अप, डोंट बी सिटिंग ऑल डे लॉन्ग. कुछ ना कुछ स्ट्रेस बस्टर ढूंढिए अपने लिए. कुछ भी हो सकता है, सबका यूनिक है. कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग गाना सुनते हैं, कुछ लोग बच्चों के साथ खेलते हैं, गार्डनिंग करते हैं, सैर पे जाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं. जो भी हो, यू हैव टू फाइंड अ वे टू मैनेज स्ट्रेस, अदरवाइज इट विल स्टार्ट मैनेजिंग यू एंड यू डोंट वांट दैट. फाइनली, ग्रैटिट्यूड. पहला, आप सबको फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड गिविंग मी अ पेशेंट ईयर. मगर छोटी छोटी बातों में हर रोज कोई ना कोई खुशी ढूंढना बहुत ही बड़ा काम है. एंड दिस इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड. एंड ट्रस्ट मी, योर लाइफ कैन चेंज बाय जस्ट सिंपली प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एवरी डे इन राइटिंग. आज मैं थोड़े ज्यादा अच्छे मूड में हूँ, ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, तो सोचूं मैं एक्स्ट्रा 5 टिप्स आपको दूं. तो आई नो हम 5 कर रहे थे, बट व्हाई नॉट गिव 5 आउट मोर. प्लीज बी काइंड. बी काइंड टू योरसेल्फ, बी काइंड टू अदर्स. हम लोग काफी एक दूसरे को ट्रोल करने लगे हैं ना. लेट्स नॉट बी मीन टू ईच अदर प्लीज. डोंट गो इन अ प्रिडिक्टिव मोड. जस्ट बिकॉज किसी ने कभी कुछ ऐसा किया है डजंट मीन कि वो एक बॉक्स में डाल दिया जाए एंड दैट दे शुड बी लेबल्ड एज what they have done in the past. We don't become predictive about people's good actions, then why bad? The next tip is so important and so many will resonate. Stop being a perfectionist. Perfectionism is a bubble. Your perfect is different than my perfect. Perfectionism बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग है, जिसके पीछे लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस खो बैठते हैं, प्रोसेस नहीं एंजॉय करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट के पीछे भागते रहते हैं. लेट गो. Very easy to say, quite interesting to do. मगर पकड़ के रखना negative emotions is detrimental for you. So learn to let go. And finally, take a chance. A leap of faith, like this girl is taking a leap of faith. Take a chance.
if there is something that you've been meaning to do and have always wanted to do and been scared to do, now is your chance. Don't think when is going to be a good chance and pandemic के बाद करूँगा या सोमवार को करूँगा. Do it now. Now is a good time, and now is when you start. So take a chance, and finally, please stay safe. Please wear a mask. Please stay at home. Don't go out if not necessary. Please take care of your mental health a little bit extra in the pandemic, and keep smiling. Thank you. Thank you for being a part of this, and have a wonderful day. Dr. Era Dutta, once again, welcome you to FlexiSTRONG Talks. Can you hear us? Yes, I can hear you. Yes, doctor. So that was amazing, wonderful talk. And I have been getting so many questions from so many people, and I'm sure we'll find time to answer all of them. Question we have from Naresh. He says that how do I come out of introvert? He is introvert. He feels stressful that, he's not very confident, not very strong. So how can he come out of this so-called introvert nature of his? So first of all, being an introvert is not a bad thing. It's actually a superpower. There's a wonderful book on this topic called The Power of Introverts. You must take out some time to go through it. And some of the world leaders are actually introverts. Now, let me, for the people who don't understand the introvert-extrovert concept, just try to break it down. ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो लोग अकेले रहते हैं वो introverted है. That's not how it works. In reality, introverted people are the ones who prefer to be by themselves, feel more recharged and energized with their own company than others. Whereas extroverts like me draw energy from other people. So I get more energized when I speak to people, whereas some people feel zapped after talking to others and they associate with introversion. But don't consider this as a bad thing, Naresh. Just realize that this is something that you have which can be used. You're probably an excellent listener. You have a lot of patience. People want to come up and speak with you, and you want to harness those superpowers. If you're having difficulty in socializing, you may want to, of course, for starting, आजकल तो digitally socialize कर सकते हैं, but you may want to interact more and more and more with people. That's how it begins. So thank you so much, doctor. Now, Mr. Abhinandan has a very long question, but I'm just going to summarize the question. Basically, he's always worrying. His worries are what family will say. If he makes a mistake, boss will fire him. What will happen? So whatever he does, he's worried about whether, somebody is watching, somebody is going to say something to him which will depress him. So how can he get over this worrisome nature? We actually touched up in the talk. I spoke about कुछ कुछ होता है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है mind में. We're always thinking, and thinking is not a bad thing. So I think somebody must have mentioned about overthinking. I did manage to speak into one question. So first of all, if you're constantly worried, it could be a sign of anxiety disorder, and this is something that would need help professionally. However, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं that you can do while it is under your control, because not everything has to get started only in the doctor's office. A lot of it can start from home. What part of your worries are realistic and what part of your worries are unrealistic? Just take your worries, put them down on paper, and just segregate them. Realistic, unrealistic, realistic, unrealistic. At the end of it, you'll realize that a lot of them are falling in the unrealistic part, and that's where you start working. Realistic worries are real. Like somebody said, job market is bad. It's a realistic worry. We all are having that worry. But the unrealistic worries are the ones that you need to start working on. So probably seeing a professional would be a good idea for these. The next question we have from Agam. He says, why we can't feel fullest and socialization with people, and how do I remove social anxiety disorder that I feel I'm suffering from? So let me answer in parts. पहले वाली बात जो है, why do I not feel to the fullest with people? That's because you're physically here, but you're mentally elsewhere. So right. Even though आप ये सुन रहे हैं, but you're possibly even also looking at the clock, you're possibly also looking at one more gadget, you're possibly also thinking, what am I going to eat later? So you may be physically, आपके कान सुन रहे हैं, but you're not registering it. This is called being unmindful. A lot of us are just unmindful. We're just going through the day, just walking from A to B, not realizing हम कैसे पहुंच गए वहां पे. So that's the first part that needs working. The second part about social anxiety disorder, again, it's a disorder. Anything which is a disorder, अगर आपको diagnosis किया है, तो definitely seek the professional help. But social anxiety is very common. Again,
अगर रूम में गए तो अरे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, why are people looking at me, why are people, are people judging me, am I eating in a strange manner? These are again things that personality enhancing workshops can help with, which you can start talking in front of a mirror. You can start making small videos of yourself of talking and look at yourself. These are the ways you start breaking the ice, picking up common conversational topics, reading the newspaper, staying updated. And that's how you overcome the shyness and the social anxiety eventually. A lot of people are saying, how do I mind my mind? Because it's always overthinking. How do I control that overthinking, that inner voice that is letting me not do so many things that I want to do? Why is overthinking a bad thing? ये चीज मैं सवाल दिन में 10 बार ही सुनती हूँ कम से कम. ये overthinking के साथ इतना नेगेटिव क्यों अटैचमेंट हो गई? I don't know why. We all think as human beings, we are meant to think till we die or we are brain dead, at least one of the two. सोते हुए भी हम सोचते हैं subconsciously. Thinking is not bad. Thinking is bad if you're not really doing anything productive with your thinking, number one. All the great inventions in the world have come from overthinking. All the great ideas have come from brainstorming and overthinking. We want our memory to give us, our brains to give us new ideas. But overthinking is bad if you're thinking about things not under your control. Meaning you're sitting here and you're wondering कि America में, let's say, कोई problem हो रही है, वो कैसे solve की जा सकती है? It's not under your control. If you're not solution focused, then overthinking is a waste. If you're looking for solutions, it's a good idea. So stop thinking of overthinking in extreme negative terms. One thing you want to do about overthinking, and this is a very nice way that I say, when in doubt, write it out. मतलब यहाँ पे जो खिचड़ी पुलाव पक रहा है, that is ख्याली पुलाव, and you're just thinking and thinking and thinking on a loop. When you start writing what you're thinking, it becomes the reality, and you'll be better able to channelize your thoughts, channelize your thinking. So when next time you're overthinking, take out your phone, take out a pen, take out the Word document, doesn't matter, and start writing, आज मैं ये सोच रहा था, that what about, and you'll see a more rational thought process coming through. So moving on, we have a question from, where he's asking, Wasim is asking that, how can I, exam stress, how can I get over exam stress? So Wasim ji, on a lighter note, अभी तो exams हो ही नहीं रहे, सरकार exam पे exam waive कर रही है, फिर भी his question is कि how can I get over exam stress? पर उससे ज्यादा एंजाइटी हो रही है, बिकॉज जब एक डेफिनेट डेट होती है एग्जाम की, दैट in 2 months my exam will be over and then I'll be free, is a better feeling than not knowing कि एग्जाम कब आएगा और कब चला जाएगा, and all of that momentum goes for a toss. So Wasim, first of all, लाइफ में हर पड़ाव में एग्जाम होगा. सिर्फ स्कूल इज नॉट द एग्जाम्स, कॉलेजेस आर नॉट द एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट द एग्जाम. एवरी डे इज एन एग्जाम. Every day you have an opportunity to learn. Every day you have an opportunity to, stand in front of someone and be assessed. So don't think of exams as the only thing in life. जितना fear आप कम कर देंगे, शेर आया, जितना शेर को आप थोड़ा सा कहेंगे ठीक है शेर आ भी सकता है, बट शेर मुझे जरूरी नहीं है खाएगा, that's imperative. Second is be well prepared, obviously. Third is that take care of your sleep, take care of your appetite, take care of your basic body movement despite studying for exams. You can do it because एक दिन में कोई 24 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकता है. So taking care of your other necessities is as important as studying. And finally, exam stress, might I add, is not a bad thing. I'm going to repeat it. Exam stress is not a bad thing. I'll tell you why. Anxiety बुरी नहीं होती है. So exam से पहले जो थक होना, oh my god, will I pass or not? Oh my god, bathroom जाना पड़ेगा. This helps us. That's why we're able to stay up all night and study. That's why we're able to give it that last moment cramming outside the exam hall and give our answers. Because that anxiety is actually a good anxiety. It helps you, and those deadlines really, really get you to be productive. Otherwise, exam kab hoga pata nahi, exams are not a big deal, they will not be marked. I don't think you'll take that seriously, right? So exams are not necessarily always bad. The stress that you're associating is just you getting through to the other side. Next one is a very interesting question from Sukriti. She's saying, nowadays it feels better to be alone. Is it okay or there's something wrong with me? If you enjoy it, then there's nothing wrong with it. Although loneliness, so being alone and loneliness are also very different things. So being alone is probably just distancing and being in your own room. Loneliness is when you feel alone even when you're surrounded by people that care about you and love you.
So if you're enjoying this free time or, me time or spacing yourself out and doing something fun with it, constructive with it, then go and enjoy it. There's nothing wrong in it. But if it starts affecting your general well-being, meaning you're alone and that's why you can't get focused on work, and you're alone and you're craving somebody's, company, and it's affecting your sleep appetite, then it's a problem. So I think आपका question ऐसे frame था कि आप enjoy कर रहे हैं and you just wanted to double check कि ये ठीक है कि नहीं. Yeah, so it's perfect. Right. The next question we have from Subhash Saraf, and many other people have asked this question, that I'm a short-temper person, I get angry very fast. How do I get over this? Because sometimes it lands me in trouble and also, spoils my relationship with my loved ones. So anger is just an emotion. Again, प्यार एक इमोशन है, एंगर एक इमोशन है, खुशी एक इमोशन है, दुख एक इमोशन है. Anger is not the problem. How you react in the anger is the problem. Similarly, if in love, somebody starts reacting in a way that they become overpossessive, that's also bad, right? So in that case, does love become the problem? Well, anger is not the issue. Your reaction is the issue. You need to be more mindful about what is really triggering you. तो मैं कुछ factors कहती हूँ जो लोग ज़्यादा आसानी से गुस्सा हो जाते हैं. Why are they getting so angry or why are they getting so short-tempered? First is expectations. Often our expectations are something and we don't get it, and that's when we get angry. So I wanted to go out, but then it started raining and that got me very angry. Second thing is depression and anxiety, and even drug abuse. Very common in cases में बहुत ही आसानी से गुस्सा आ जाता है because the neurochemicals are not under your control. Third thing is failure. When people worry that they will fail, they usually resort to anger, and that's extremely common again. And finally, relationships. Relationships एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे everybody believes that their way is the right way and the other person has to listen to their way. So work on these 4 or 5 domains. Work on the previous technique that I said, meditation to calm your nerves down, to not be knee-jerk. If you're drinking, smoking, try to cut that out and you'll notice an instant difference in your reactivity for a few days. So try to work on your anger from the root cause, not just the superficial. Thank you so much, doctor. The next question is, can counseling cure OCD? The girl is suffering from OCD and she's 13 years of age and she wants to know if this can be cured through counseling. So first of all, I'd like to say the word cure here is not what I want to use. Cure means to never have again. I've had COVID. I just 3 weeks back had COVID. That doesn't set me up for never having COVID again. मैं cure नहीं हो गई हूँ COVID से. I was treated for COVID. I'm better and I've fought off COVID, right? Similarly, most medical illnesses cannot be cured, mind you. They can actually be treated. So yes, OCD can be treated with counseling. That was the specific part that you were asking whether counseling can help. Depends again on the severity of the OCD. Like I was saying that koi bhi bimari all or none nahi hoti, it's on a spectrum. So yes, counseling can help a lot with OCD, especially 13-year-old girl, young kids. We usually try to do therapy in most of the cases. Thank you so much. The next question we have is again a very interesting one. How to be mentally and emotionally a strong person? Is there any formula, any tips that will make me mentally and emotionally strong? There is no magical pill to be mentally and emotionally strong. I think you learn as you go. However, if you have to be mentally and even emotionally strong, you need to learn resilience. Resilience is a term that we use. सबके लाइफ में बुरा होता है, सभी लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन आई होती है where they have felt very distraught. But resilience is to accept those problems, process it, and move on, and not let that hold you back. So some of the other questions that you had said in the past, like, oh, I'm unable to let go of the past, I'm constantly thinking of the future. These individuals usually think that they're not strong enough, but they can be stronger just by learning to process all of the things that they've already had. Mentally strong लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर अपने साथ थोड़ा सा strict होते हैं, थोड़ा discipline follow करते हैं. That's very important. So if you want to be mentally strong, try being a little more disciplined with yourself, whether it is keeping your cell phones away at night, like I said, or whether it's making sure that you're hydrated and you exercise. So my one thing to you would be to start being more disciplined, to be more emotionally and mentally strong. So thank you so much, Dr. Era. That was so wonderful and so patiently you answered all the questions. We covered almost everything. And thank you so much, Shyam Steel, for organizing this wonderful show and bringing so much learning to our doorstep. Thank you all the viewers, all the attendees who joined us today, and keep supporting FlexiSTRONG Talks.